Hello my dear students, welcome to the math class. Let's start today math class. Today I will teach these things given that distance of a point from a line. Distance of a point from a line. As a line drawn here that L is a line, L is a line, P is a point, coordinate of P be x1, y1, distance from P to this line be D. A perpendicular line drawn on this line. So distance from P to M, let this is the D. We have to find a D. हमको D निकालना है, ठीक है. This line let AX plus BY, हम इस लाइन को AX plus BY plus C is equal to 0 लिख सकते हैं, लिखेंगे. This line intercept on x-axis at point A and on y-axis at point B. So we have to find the coordinate of A and B. About this already you are familiar to find the point. Okay, to find the point on x-axis at point A, y will be 0. that y का वैल्यू यहाँ क्या होगा, 0 होगा, ठीक है. So okay, so y is equal to, if 0 will put that y का वैल्यू यदि हम 0 लिखते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, ax plus c is equal to 0, or we can say ax is equal to minus c, or x is equal to minus c upon a. So coordinate of a will be minus c upon a comma 0, क्योंकि y वैल्यू इधर 0 होगा. Now at b या for b, एट बी के लिए हम देखें, दिस वाज फॉर एट ए, ये ए के लिए था. एट बी के लिए हम देखते हैं जो है फॉर एट बी, विल थिंक दैट हियर वाई वैल्यू विल बी, सॉरी एक्स वैल्यू विल बी 0 ऑन वाई एक्सिस. सो हियर एक्स का वैल्यू 0 रखना है, तो दैट विल बी इसी केस में एक्स वैल्यू 0, वी हैव टू पुट दैट. सो विल बी बी वाई प्लस सी is equal to what, 0, or can we write that by is equal to minus c, or y is equal to minus c upon क्या, b. So coordinate at a का coordinate आपका हो जाएगा माइनस सी कामा ए, सॉरी माइनस सी अपॉन ए कामा 0, एंड b coordinate हो जाएगा 0 कामा माइनस सी अपॉन b, ठीक है. ये आपका coordinate हो गया. ए माइनस सी अपॉन ए कामा 0, एंड बी, ये बी है, बी क्या बनेगा 0 कामा माइनस सी अपॉन बी, ये बी बनेगा, राइट. नाउ व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बाय द डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, इट मीन 0 माइनस सी अपॉन ए. अच्छा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x, इधर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट विल बी माइनस सी अपॉन बी माइनस 0 होल स्क्वायर. सो वी कैन से AB will be equal to c square upon a square under root plus c square upon b square. Okay, here c square we can take the common, that will be equal to c square. Here a square plus b square upon a square b square what, under root, ठीक है. सिंप्लीफाई करेंगे, सी स्क्वायर कॉमन दिया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम हो गया. सो कैन बी राइट दैट सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो दिस इज डिस्टेंस ऑफ द ए बी. पी बी ए, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. So we have to apply the formula to find the area, half into base into height. So area of triangle
PAB is equal to half into AB into what? Perpendicular distance that. Okay, so that will be equal to half, this is the C upon AB under root A square plus B square into what? Into D. D is the perpendicular distance. Now as we know, area of a triangle if all sides are given, यदि सभी साइड दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ए, so as you know that if 3 points of a triangle given, how can you find the area of the triangle? That by formula, one formula I taught that at beginning, that was the half modulus of x1 then y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 then plus x3 y1 minus y2. ये फॉर्मूला आपको हम पढ़ाए हैं कि एरिया इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 minus y2. This is the formula for the area. So this formula we have to apply here for these 3 points to find the area. So write down according to that. What will be? That will be equal to area of that triangle will be equal to half modulus. Okay? क्या? x1 here x1 then y2 minus y3 that is minus c upon b minus 0 plus x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x2 here having that 0, so next terms will be 0 because ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. प्लस x3 पर हम आ रहे हैं, मीन दैट माइनस सी अपॉन व्हाट? a. ओके, x3 के बाद y1 माइनस y2, इट मीन दैट विल बी y1 माइनस, अच्छा देखिए y1 माइनस और माइनस दैट विल बी प्लस व्हाट विल बी c अपॉन b मॉडुलस ऑफ दैट. ओके, simplified, what will be? That will be equal to 1 upon 2 modulus of minus c x1 upon b then minus c y1 upon a minus c square upon ab of the modulus. Okay, let me remove this. नाउ सिंप्लीफाई, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए सी कॉमन ले लेंगे, सो दैट विल बी 1 upon 2 modulus minus c if you are taking the common, so here will be x1 upon b plus y1 upon a plus c upon ab. Okay, now ab LCM can be write 1 upon 2 मॉडुलस. देखिए मॉडुलस वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो मॉडुलस सी, चलिए हम लिख देते हैं सी अपॉन ए बी. ओके, मॉड ए बी एलसीएम, हियर विल बी x1 a प्लस y1 b प्लस c अपॉन व्हाट? ए बी. 1 minute. Here mod c we have to separate that because ab अभी हम यहाँ लिखे हुए mod of ab that. Okay, so this will be equal to 1 upon 2 c upon ab modulus of ax1 plus by1 plus c
ax1 plus by1 plus c. This is area of triangle, and here also same triangle area. ये दोनों क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो दोनों सेम होगा. देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन दैट. यदि दोनों एरिया है उसी ट्रायंगल का, सो देयर विल बी नो डिफरेंस. इट मीन्स बोथ एरिया विल बी इक्वल, सेम. तो इसको हम क्या करेंगे? दोनों को इक्वल करेंगे. व्हाट इज आवर एम दैट? आवर एम इज टू फाइंड दैट डी वैल्यू. डी क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन. हमको डी निकालना है. ओके, सो टू फाइंड द डी, one thing more that, see, this value will be positive, no doubt about that. D is the perpendicular distance. We have to write into the mod. इसको हम mod में लिख लेते हैं. So we have to make that equal both, because both are the area of the triangle. Now half mod of c upon ab under root a square plus b square into d is equal to half mod of c upon ab mod of ax1 plus by1 plus c. This half cancel, modulus of c upon ab cancel. D we have to find, so D is equal to mod of ax1 plus by1 plus c over under root a square plus b square. So we found that distance from a point to the line ax plus by plus c is equal to ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. This was the line. This is the point P, x1, y1. This was the D, M. So D value, if line is given ax plus by plus c is equal to 0. So distance, perpendicular distance from the point P, x1, y1 to the line, this is equal to ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा जो है. ठीक है. होप दैट कंसेप्ट ऑफ ईच लाइन इज द क्लियर दैट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, लेट टेक दैट वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड more, and then you have to do some more practice on the basis of this formula that. Okay, so let's take one example to solve, to understand. This is the molar. So this is the question from the exercise 11.9. Question number first I taken that find the distance from the point P3 minus 5 to the line 3x minus 4y minus 26 is equal to 0. इस पॉइंट से इस लाइन तक हमें डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला हुआ. ठीक है. As you know that formula, D is equal to modulus of ax1 plus by1 plus c over upon under root a square plus b square. ठीक है. A means the coefficient of a square, coefficient of x square and coefficient of y square. So we have to use this formula to find the perpendicular distance from point 3 minus 5 for this line that. So let's find out that. So according to this formula, modulus of, देखिए, this is the a, this is the b, and this is the c. Coefficient of x a, coefficient of y b, coefficient of c. यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं. Comparing with ax plus by plus c is equal to 0. If we compare, a is equal to what will become? A is equal to 3, b is equal to minus 4, and c is equal to minus 26. This way you can find out value of a, b, c. Then put here modulus a x1. This is the x1 like and this is the y1. ठीक है. a x1, a means the 3 into 3, 3 into 3. Now plus b y1, b means minus 4 into y1, what will be? Minus 5 plus c how much here? Minus 26 over under root
coefficient of x square plus coefficient of y square. A square means the 3 square plus b square means the minus 4 square. So if you simplify, you'll find that 3 3 are 9, 4 5 are 20, minus 26 or under root 9 plus 16, that will be equal to modulus of 20 plus 9, that is 29, minus 26, that will be 3 upon, this is the 5. So answer will come that 3 upon 5 unit distance from the point 3 minus 5 to the line, this given that. Okay, very simple, very easy. If you do the practice on the basis of this formula, then you can understand more that. So let's take one more questions on the basis of this formula to solve. So now this is the question. Next questions of that exercise, that point given 4 1 and one line given 3x minus 4y plus k is equal to 0. Distance between this point to the line is 4 unit given that, and asking what is the unknown value k का वैल्यू क्या होगा जो है. तो सिंपल फॉर्मूला you have to use that d is equal to modulus of ax1 plus by1 plus c is upon under root a square plus b square. In the place of d, what you have to put? We have to put the 4 is equal to under root a1 b1 c x1 y1. So 3 into 4 minus 4 into what? 1 plus k upon under root a square b square means 3 square plus 4 square. This is 3 square plus 4 square, that will be 25. Under root 25, that will be 5. So can we write that this will be equal to 4 is equal to 3 4 ja 12. Then this is the minus 4 should be that. Yeah, this is minus 4. ax1 plus b y1. ये b है, b minus 4 है. So that will be minus 4 plus k upon what? 5. This 5 transpose here. 5 4 is 20. So 20 is equal to 12 minus 4, that is 8 plus k. We have to find the k, transpose this 8. So k will be equal to 12. So we can say this k value is the 12, right? Okay. So these two examples I have taken to find the distance by using the distance formula. Distance from the point to the line. Okay. So student, I hope that concept of each line is clear that. So that's all right for today that. Thanks for watching my video that. Okay, thanks today.